welcome to your channel Zebish English Classes, and in this video lecture I have taken up this story Quality, which has been written by John Calsworthy, and this story has been taken from ISC syllabus. So this is for the students of ISC, and this story Quality was published in 1912. Now before I go ahead with this story, I would like to tell you that this title of the story Quality is going to actually show you how the meaning of this word quality has changed drastically since the Industrial Revolution. See, we know that 1900 had begun a modern era, and as a result also a lot of changes have taken place. And since Industrial Revolution, we know that firms had come up, big industries had come up, and small business and cottage-based industries had simply been crushed down. Consequently, because since the Industrial Revolution, industries had also started all the machines and everything. That means labor intensive techniques had been completely replaced by technologies. So we see that there had been a lot of changes as a result of the development of technologies as well. But it is not confined to this much only, because somehow or the other you will see that all these changes had impacted to a very large extent the mindset of people who had started thinking in a very different way, and who had become quite you can say such people like ostentatious हम उन लोगों को कहते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा दिखावा होता है, जो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं और हर चीज़ में शोबाजी करना। और मतलब हमने वॉच पहनी है तो भी हाई ब्रांड की, हमारा फुटवेयर है तो वो भी हाई ब्रांड का। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्प्ले टू द पीपल व्हेनेवर आई एम सिटिंग इन द पब्लिक, तो आई एम मेकिंग श्योर कि इट शुड बी सीन बाय देम। अगर हम ग्रॉसरी करने जा रहे हैं तो हम नॉर्मल पेवमेंट से, हम स्ट्रीट से नहीं लेंगे, क्योंकि इफ़ आई एम सीन बाय सम रिलेटिव और फ्रेंड डूइंग ग्रॉसरी स्ट्रीट पर, तो इसमें हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो आई मस्ट गो टू अ बिग मॉल ओनली। हम बड़े से मॉल से निकलते हुए नज़र आए तो हमारा स्टेटस सोसाइटी के अंदर हाई हो जाएगा। तो लोगों की जो मेंटालिटी थी क्वालिटी, लोगों की मेंटालिटी ने, माइंडसेट ने टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट क्वालिटी की डेफिनेशन को बदल दिया। जहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले तक, दैट मीन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले तक, क्वालिटी का मतलब होता था क्वालिटी when someone is putting in all the honesty, integrity and skills and a lot of efforts, lot of endeavor, hard work, that comes out with quality. Anything, जब भी हम किसी काम में, किसी सर्विस में या किसी प्रोडक्ट में अपनी ऑनेस्टी, अपनी इंटीग्रिटी, अपना हार्ड वर्क, अपनी स्किल्स, अपने एंटीवर्स, एफर्ट्स सब कुछ लगा देंगे, तो उसका जो आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा बेस्ट होगा। चाहे वो सर्विस में हो, लाइक इफ आई टीच यू इन द बेस्ट वे, ऑनेस्टली and with a lot of endeavors and efforts, obviously it will come out with flying colors, in the sense that you will love it, you'll appreciate it, you'll get the quality, you'll get to learn something. But अगर हम उसी काम को बस ऐसे ही करें बेमन से, तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। उसी तरह से ये तो हो गई सर्विस की बात। अब हम प्रोडक्ट की बात लेते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को अगर रॉ मटेरियल ऐसा लगाया गया है जो कि वर्दी नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा मिलावट है, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब डिसऑनेस्टी की गई है, तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, जैसे आजकल बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जो फेक प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, तो उस प्रोडक्ट के अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई इंसान चाहे वो प्रोडक्ट बना रहा हो, चाहे वो सर्विसेज दे रहा हो, अपने हार्ड वर्क को डाले, इंटीग्रिटी को डाले, ऑनेस्टी को डाले, मेहनत को डाले और अपने एफर्ट्स को डाले और अपनी स्किल्स को डाले, अपनी नॉलेज को डाले, पैशन के साथ उस काम को करे तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट या सर्विस का आउटकम होता है वो बेस्ट होता है। उसी को एक्चुअली कहते हैं क्वालिटी होना, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। लेकिन फिर क्या हुआ? Since Industrial Revolution, this definition of quality changed into the definition of quality, which meant
high brand and high cost. If you have paid a good amount of money, a huge amount of money for something in the name of a good brand, that means you are rich enough to do so, and the thing which you are wearing or you possess is for sure best in quality. Why? Because you have paid a huge amount of money for that. So quality began to be seen with respect to the cost or the worth. Worth you can say in terms of money, कि उसके लिए आपने कितना मैक्सिमम पे किया है, कितना ज़्यादा पे किया है, जितना ज़्यादा उसकी कॉस्ट उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी। ये लोगों का माइंडसेट बना दिया हाई ब्रांड्स ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से। और फिर आप देखोगे कि कैसे जब क्वालिटी की डेफिनेशन चेंज हुई ड्यू टू द चेंज इन द माइंडसेट ऑफ पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ दोज हाई ब्रांड्स कमिंग अप, तो फिर जो एक स्मॉल लेवल पे काम कर रहा बंदा था वो सफ़र करने लगा। और उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर जेस्लर एंड ब्रदर्स। सो मिस्टर जेस्लर और उनके भाई, इन्हीं दो कैरेक्टर्स के थ्रू हम देखेंगे, मतलब दीज टू कैरेक्टर्स हैव बीन पोर्ट्रेड इन दिस स्टोरी, बट दीज टू कैरेक्टर्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ऑल सच people who were still thinking that by putting their best endeavor and their honesty and skills and everything into their work, they could fetch good income, they could increase their sale and value everything. तो उनकी वहाँ पर वो जो थॉट थी वो फेल हो गई। तो वो सिर्फ मिस्टर जेस्लर के साथ नहीं हुआ, मिस्टर जेस्लर और ब्रदर, उनके भाई मिस्टर जेस्लर एंड ब्रदर कि जैसे बहुत से कैरेक्टर्स, बहुत से लोग थे उस टाइम पर जिन्होंने सफ़र किया। तो कैसे ये क्वालिटी की डेफिनेशन चेंज हुई? क्वालिटी की डेफिनेशन चेंज हुई क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ। माइंडसेट लोगों का चेंज करने में हाथ था हाई ब्रांड्स का, which had come up, which had arrived as a result of industrial revolution। और फिर ये हो गया कि जितनी हाई कॉस्ट उतना हाई ब्रांड और उतना ही ज़्यादा क्वालिटी, वही क्वालिटी की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब ये जो हाई कॉस्ट है और हाई ब्रांड है, सी हाई कॉस्ट तो उन्होंने हाई ब्रांड को बना दिया, बट अब हाई ब्रांड कैसे बनाया जाए? तो हाई ब्रांड के लिए एडवर्टीजमेंट, as much as you advertise you become a brand, as much as you are able to give services। मतलब क्या है, आप क्यों स्ट्रीट से ग्रॉसरी करने की बजाय जाना चाहते हैं मॉल में? क्योंकि आपको लगता है when you go to a mall someone else opens the door for you, you are offered a glass of water, sometimes a cup of tea, coffee as well, and then you are asked to sit down, you are someone smiles when that person looks at you, if you get an eye contact with the person, and then will present everything to you in a very generous way, will help you, will assist you in everything, and will very respectfully address you with sir and ma'am like this। तो ये चीज़ें जो थी, ये सर्विसेज अफोर्ड करना या फिर बहुत एडवर्टीजमेंट्स करवाना, ये दोनों ही चीज़ों को चाहिए कैपिटल। You don't need to put in a lot of efforts, you don't need to possess good skills, you don't need to have a good knowledge। इसके लिए, इन चीज़ों के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए आपको नॉलेज नहीं चाहिए, आपको एडवर्टीजमेंट के लिए ऑनेस्टी की या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे की ज़रूरत है। एडवर्टीजमेंट करवाइए, कैपिटल इन्वेस्ट करिए, एडवर्टीजमेंट करवाइए, कैपिटल इन्वेस्ट करिए, बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दीजिए, एक गिलास पानी ऑफर कर दीजिए, कोई और दरवाज़ा खोल दे, और लोगों के लिए ये सर्विसेज और एडवर्टीजमेंट जो है वो इस तरह का काम कर रहा था कि फिर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या बन गया, हाई ब्रांड बन गया। तो हाई कॉस्ट हाई ब्रांड के नाम पे ली जा रही है और हाई ब्रांड बनाया जा रहा है एडवर्टीजमेंट और सर्विसेज के थ्रू, जो कि अननेसेसरी सर्विसेज हैं जिनके लिए कैपिटल होना मस्ट है और जिस कैपिटल को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली छोटे बिजनेसमैन।
जैसे कि इस कहानी के अंदर मिस्टर जेस्लर एंड हिज ब्रदर. सो वी विल सी हाउ मिस्टर जेस्लर एंड हिज ब्रदर हैड सफर्ड सो badly, atrociously, which means very badly, as a result of industrial revolution, and their entire business had come to an end and they had been crushed to the extent of eventually dying, that too as a result of starvation, very unfortunately. It really hurts when you read the story and go through how Mr. Jessler and his brother had tried their best to survive in the market. Had, what he used to do, आप देखोगे कि मिस्टर जेसलर क्या करने की कोशिश करेंगे जब उनको नहीं मिलेंगे कस्टमर्स, तो he will try to find out fault with himself and he will try to put in more efforts into his work. He will try to compete his own old version, and he'll try to take out or extract the best out of himself. But where had he failed? He had failed in realizing that it was not the demand of the customers. It was not the taste and it was not the preference of the consumers that they demanded better quality and the best quality in the definition that they had been thinking. That means Mr. Jessler and brothers. तो मिस्टर जेस्लर और ब्रदर्स जो क्वालिटी एनहांस कर रहे थे, एक्चुअल में उस क्वालिटी की डिमांड तो थी ही नहीं ना कंज्यूमर्स को और कस्टमर्स को. उनको तो कोई और क्वालिटी चाहिए थी, हाई ब्रांड की, क्योंकि उनका माइंडसेट बदल गया था. लेकिन मिस्टर जेस्लर और ब्रदर जो है उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अफोर्ड कर पाते उस क्वालिटी को. पहली बात, they couldn't afford to provide services, they couldn't afford to do advertisements. और उनकी अगर पर्सनालिटी की बात करें जो कि डिस्क्राइब की गई है स्टोरी के अंदर, तो उनका जो स्टेचर है वो बहुत शॉर्ट हाइटेड है वो मिस्टर जेस्लर. उनकी जो आवाज़ है वो भी ऐसा लगता है कि गले से आवाज़ निकल रही है एकदम हलक से. मतलब व्हाट आई मीन टू से कि like it is very much said that these days that communication skills matter a lot. Communication skills, you should be able to fascinate people, you should be able to attract the customers, in the sense that you should be able to convince them and persuade them with your words. Now here you see his way to speak, and also at the same time Mr. Jessler lisped. He used to lisp. That means वो थोड़ा सा तुतलाते भी थे. तो इसका मतलब कि उनकी पर्सनल ओवरऑल जो पर्सनालिटी थी वो भी फैसिनेटिंग नहीं थी, एंड he did not have a pleasing or attractive look. ना तो उनकी पर्सनालिटी में था, ना उनकी कम्युनिकेशन में था, और ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो एडवर्टीजमेंट करवा सकते या फिर वो बहुत ज़्यादा सर्विसेज दे सकते. हाँ, वो सिर्फ क्या कर सकते थे, अपने काम को बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर सकते थे, जिसको उन्होंने बहुत कोशिश किया कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने की, लेकिन लोगों को वो चीज़ चाहिए नहीं थी. तो अब आप ये देखिए कि ऑल्दो अगर देखा जाए, अच्छा मिस्टर जेस्लर एंड ब्रदर्स करते क्या थे, लेट मी टेल यू कि वो बूट मेकर थे, वो बूट्स बनाते थे, शूज़ बनाते थे. तो अगर मिस्टर जेस्लर की हम काम को देखें कि बूट्स बनाना, तो बूट्स को बनाने से किसी की पर्सनालिटी का क्या रिलेशनशिप है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई शॉर्ट हाइटेड है या फिर वो तुतलाता है या फिर whatever. But here things had mattered so much. And why did it matter? Because unfortunately he was doing his business in the era, in the time period which had already witnessed industrial revolution, and he could not survive in the way he was doing his business. He lagged behind. He began to lose customers, although उनके पास वैसे भी बहुत customers नहीं थे, क्योंकि उनको बहुत लोग जानते भी नहीं थे. उनके पास इतना भी नहीं था कि वो बाहर बहुत अच्छा डिस्प्ले कर पाते अपने शॉप के. लेकिन जो कहानी के नैरेटर हैं, उन्होंने हम लोगों को बताया ये चीज़ कि वो बचपन से, मतलब वो अराउंड 15 ईयर्स के थे, तब से उनके पास जाते थे, अपने फादर के साथ उनके पास जाते थे काफ़ी अपने टीनेज टाइम से, और फिर वो हमेशा फिर जाते थे उनके पास, और एंड तक वही गए हैं. और फिर उन्होंने बताया कि कैसे
उन्होंने हालात देखा चेंज होते हुए, कैसे एक ऐसी शॉप थी मिस्टर जेस्लर के पास जो बाहर से 2 लगती थी बट अंदर से मर्ज होके एक थी। फिर कुछ टाइम के बाद मिस्टर जेस्लर और जो उनके भाई थे वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाए और एक पार्ट जो शॉप का था वो उनको देना पड़ा, छोड़ना पड़ा। और फिर ये हुआ कि बस एक ही पार्ट बचा। अंदर एकदम आप शॉप के जाओ तो बहुत अंधेरा है, इट्स टू डार्क एंड that just Mr. Chester will continue to work upon those raw materials whichever he had upstairs। वो रहते हैं अपना काम करते रहते हैं। जब कस्टमर आता है तो फिर वो धीरे धीरे उतर के आते हैं, ऐसा लगता है कि ख्वाबों की दुनिया से आ रहे हैं। लेदर हमेशा उनके हाथ में होता है और जब कोई उनको एडवांस में कुछ पेमेंट करता है लेदर के लिए, देखो लोग कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं कि लोग एक्स्ट्रा पैसे क्वालिटी जो है लेदर की क्वालिटी के साथ ही कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कि कम अच्छी क्वालिटी का लेदर ले आए और फिर उसका बूट्स बनाते, जो पैसे बचे उसको कलेक्ट करते जाएं, ऐसे ही सारे कस्टमर्स के साथ करके और फिर उस पैसे का एडवर्टीजमेंट करके अपनी शॉप को बढ़ा लें और कुछ पैसे बचाकर सेविंग्स कर लें। बट इस तरीके से उन्होंने नहीं किया। Since he was honest, he used to spend the entire amount of money which used to be given by the customers in the raw material, in the genuine raw material he used to spend, and for that he would not be able to save money for himself, and as a result of which he had come to the situation of starving. So see, मतलब वो honesty दिखा रहे थे, probity, which means honesty. He was showing probity or honesty, but this was not the demand of the consumers. This was not something which industrial revolution could allow to happen. So, and he did not realize it, so he could not cope up with the world and had to eventually die. And that too, hungry. He died hungry. He died due to hunger. And not only Mr. Jessler, but his brother as well. So both the brothers had died due to starvation just because they could not survive. They could not succeed in their business. Their business had simply suffered so much and they had lost all the customers. In spite of giving the best quality of the products, they were not valued. Why? Because they were not there in a big mall. They did not have enough money to advertise and everything. See, instead of telling you the entire story word by word here in this video lecture, I'm just telling you all these things unsummarized way, because this is also very important. Line by line you will understand, and I promise you that I will do so as well in another video lecture. But since you are ISC student 11th or 12th, so you need to write an answer which will be in a paragraph, which will be an essay type answer writing. So you need to know the content, the core, the subject matter of the story. You know, mainly it is more important for you to understand than only the line wise understanding, although I will that do as well. But in this video lecture I just wanted to explain you this key. This is how Mr. Jessler and brothers, who were Mr. Jessler and his brother, and they were the boot makers. So they had their shop which they lost, like one shop was lost, one part of the shop, and then another part was lost as well. And one of the brothers had died first and then the other one died as well, and both of them had died, like first one had died as a result of depression for having lost one part of the shop and for having lost so many customers and nobody coming to them, and they did not have any business to do, any money to run their family and to feed themselves. So this is how one of the brothers had died, and then it happened that the remaining one got into more depression and also realized that they were not being valued for anything that they were showing to the world. That means their virtues, honesty, integrity, hard work, endeavor and efforts, everything that they were putting into it, skills. So what happened that he died as well. He died as well. And before time you will see that the narrator, when had last visited his shop and he was still alive and had ordered some pairs of shoes, and he received those pairs of shoes along with the bill, which was kind of shocking for him since he hadn't ever done that before, and which made the narrator realize that this person must be in urgent need of money. So he just posted that money, everything to him,
And after some time, when he was passing from there, he thought of visiting the shop again. And when he went there, he found that there was some new person in the shop, an Englishman, and who was running the shop then. And by that time, Mr. Jessler and his brother, both of them had died by that time. So this was quite shocking for the narrator, because he thought that just some days back he had received that bill from that manufacturer. बट दिस वॉज सो शॉकिंग कि उसके कुछ दिन के बाद उनको पता चल रहा है कि उनकी तो डेथ हो गई। और डेथ कैसे हुई? स्लो स्टारवेशन से, धीरे 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 वो भूखे मर गए। मतलब धीरे 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 वो जब उनको उनकी बॉडी को उतना रिक्वायरमेंट जितना था वो मिला नहीं उनको, और फिर इवेंचुअली उनकी स्टारवेशन से डेथ हो गई। सो यू सी what you need to understand कि this is so ironical कि despite providing the quality, he died due to starvation, despite doing hard work, despite working hard, despite being honest, and despite being skillful. He had to die because he could not understand the mindset of the people. He could not understand their preferences, their taste, and that they had changed their mentality, their perspective towards this word quality. The meaning of quality had already changed since the advent of Industrial Revolution, and this is what he failed to understand, and consequently suffered, and unfortunately to the extent that they both the brothers starved and died due to starvation. So this story is all about it, and this is just a summary of the story. I promise I'll do it line by line as well in another video lecture. I hope you understood this much, and it will help you a lot to write a good answer. You try and write, and thank you so much for watching.